बहुत खुश रहूँगा। ओके, ठीक है। अच्छा, दमानी जी ने काफ़ी एक ज़बरदस्त शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी बेट्स हैं जिनमें काफ़ी मल्टी बैगर्स रहे हैं, वो एक जो स्क्रीन पे भी आएंगे। इन्फोसिस में इन्होंने ज़बरदस्त पैसा कमाया था। CMC जो बाद में शायद TCS के साथ मर्ज हो गई थी, उसमें ज़बरदस्त इन्होंने पैसा कमाया था। इन्फोसिस में तो 500 गुना रिटर्न मिला था इनको। CMC में ज़बरदस्त रिटर्न मिला था। एक मैकडॉवेल आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया था, उसमें तो आपकी एक रिग्रेट भी रही थी कि आप सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन शायद आप उतनी बड़ी साइजेबल बेट नहीं ले पाए जो आपको लेनी चाहिए थी। तो यहाँ से आपके जो आपको सुन रहे हैं, अगर आप एक चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका एक गुरु मंत्र क्या होगा? यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके की कंपनीज में लगाना चाहिए, किस तरीके का बेट साइज लेना चाहिए? अनुज जी, कपल ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट, आपने बताया जो मैंने शेयर लिए, और मैं भी शायद आज चर्चा करूंगा शेयरों के बारे में, बट एज अ डिस्क्लोजर आई वांट टू से दैट आई बाय एंड सेल इवन व्हाट आई जो मैं टीवी में बोल रहा हूँ, आई कुड बाय एंड सेल दैट। सो you know, please don't, these are not recommendations, these are just illustrative ideas. Please, I'm being very careful, so you know, do your own due diligence about that. So जो चीज़ मैंने सीखी अनुजीत over 30 years in the financial market, इसकी जिसी ने थोड़ी अच्छी कंपनी ले ली, भले ही not done well, but good businesses they bought and have had the patience to help them, they made enormous amounts of money. बिकॉज द इंडेक्स जब मैं शुरू किया था शेयर बाजार में 1989 में 600 के करीब था, अभी 60,000 के ऊपर पहुंच गया है. सो द इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन यू सच रिटर्न्स. आई थिंक लॉन्ग टर्म विदाउट डिविडेंड्स द इंडेक्स कंपाउंडेड 15-16% फॉर अस, व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स वी आर गेटिंग आउट देयर. सो आई फील दैट जर्नी ओवर द नेक्स्ट 20-25 years will also happen. ये भी इंडेक्स बढ़ता जाएगा. So at 60,000 to get to 100,000 is just basically 2-3 years of compounding at 16%, 18% out there. So I'm very hopeful. Now the question is, what businesses should you buy to take part in this? अगर आप busy हैं आपके काम में, आपके profession में, तो perhaps an index fund is good. But if you like to pick stocks, India is large as a buffet of choices, you say. जो हमने अभी लिया है recently, I would say some defense PSUs, some railway PSUs, and some technology shares. Defense and rail has done well, so we bought and sold them. So I'm being very clear that I've not bought all of them. I bought and sold some of them, but they offer very good opportunities to people. ये क्या एक PSU क्षेत्र था, एकदम neglected था, कोई फर्म मुझे देखना नहीं था, and yet these companies were available with single-digit PEs, 6-7% yield, and जो order book थी, visibility was for 5-10 years time. So that made for good economic sense to me. And जो point I think market ने नहीं समझा कि government is very interested in capital expenditure. How do they do this capital expenditure? They will do this through some of these listed PSUs. All right. So that gives us a great opportunity, great visibility in these companies. ठीक है, मैं इन दोनों स्पेसेस पर आपसे बात करना चाहता था दमानी जी, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग बात करनी है आपसे. 60 इयर्स क्रॉस करने के बाद आपने फिटनेस पे इतना ध्यान दिया. आप इतने फिट इतना फिट मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा. उसका राज क्या है? नहीं, आई थिंक generally, Anuj, after you age, you start to eat less. I think just the appetite shrinks after that. I've had a couple of health scares in the last few years, so I've tried to be a bit more careful. And I'm lucky. What can I say? नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमसे सीधे से बात करते रहें. तो दमानी जी देखिए, और ये वेल डिस्क्लोजर, देखिए जो दमानी जी ने बोला कि डिस्क्लोजर हम बाकायदा प्ले करेंगे, उनके डिस्क्लेमर सारे के सारे उनके हम प्ले करेंगे. लेकिन ये जो रेलवे PSUs था, ये किसी ने नहीं देखा था. ये आपने दिवाली पे हमारे सिस्टर चैनल पे आकर बोला था. वहाँ से 50% के मूव देखे हमने करीब 1.5 महीने में इन स्टॉक्स में. ऐसा क्या चेंज हो गया इनमें, जो खासतौर से रेलवे PSUs हैं उनमें ऐसा क्या चेंज हो गया? क्योंकि एक PSU टैग तो है ही इनके साथ, और एक रिस्क तो रहता ही है कि कभी भी जैसे एक बार IRCTC के साथ हुआ था, एकदम से ओवरनाइट एक पॉलिसी चेंज हुई और एकदम से एक स्टॉक 20-30% गिर गया था. तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर रहेगा दमानी जी? They're in all companies. That is, I mean, in private companies, they're there. People misallocate capital. Private company में, public company. That's part of your judgment call of what you do. And a lot of people say, "आप कैसे लेते हो PSU?" I pointed out again, not a recommendation, that I had bought Bharat Electronics, a company in 2003 at 20 rupees with 2 रुपया ब्याज दे रहा था. So it had almost 10% or maybe 5% yield, 40 with 2 rupees dividend yield. 300 करोड़ में लिया था. आज बढ़ते बढ़ते 60,000, 70,000 करोड़ का मार्केट गैप हो गया. So over 20 years it has created wealth. So it is, जो एनालिस्ट का काम है, it is to pick good stocks, whether it's in the public sector or in the private sector. And to come back, जो specific question आप पूछे थे रेलवे PSU,
बहुत सस्ते थे. I mean, just take my, you just have to believe me that if you go through the balance sheets, you'll realize that they had order books, they had earnings, they paid out 33% dividend. So I was getting 7-8% yield on these shares. You can't get 4% in fixed deposit, I'm getting 7% yield. So why would I not buy them? And the other point I said that the government wants to do capital expenditure. Say the railways want to, government wants to do huge capital. Aapne dekha Vande Mataram, all these tunnels, all these bridges, these corridors are being built. So all the capex will come through the railway companies. So they're all beneficiaries. There's also growth for the next few years. So while we buy and sell these shares, I think overall I would like to remain invested in them. तो ये मैं देख रहा था एक्चुअली सारी की सारी कंपनियों को जोड़ने के बाद ही मार्केट कैप करीब करीब 1 लाख करोड़ के करीब ही था, उससे ज्यादा का नहीं था. और उसमें IRCTC सबसे ज्यादा है, उसमें भी IRCTC very expensive share. The rest of the shares वो बोलते ना, they were actually throwing it away. So you know, sometimes other people's disbelief is your opportunity. नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे एक महीने 50-60% मूव मिल जाए उसके बाद जैसा आपने बोला कि नॉर्मली बाय सेल तो आप करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से. Yes, I remain invested broadly in them. Of course, we buy and sell some shares, do a little bit of trading. But yes, long term, I'm very well invested in defense companies. I'm very invested in rail PSUs. I'm looking aggressive to increase my bet in the Indian technology sector. ठीक है. BEL की आपने बात की, मुझे वो मेरा शो याद आ गया जो मैंने आपके साथ किया था पिछले साल, जिसमें आपने डिफेंस PSUs कहा था कि ये यहाँ से ज़बरदस्त मूव दिखाने वाले हैं. और HAL का मूव देखिए, आप BDL का मूव देखिए, खुद BEL का मूव देखिए. BEL में तो खैर आपने तो 300 टाइम्स पैसा बनाया, लेकिन इवन लास्ट के 2 साल में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है. तो ये क्या एक टेक्टोनिक शिफ्ट है डिफेंस में, और ये आगे भी रहने वाली है यहाँ पर? Anuj, let me explain a point to you. The Ukraine war hai na, that has clarified a lot of thoughts in everyone's mind. For example, the US produces 150 million artillery shells a year. That's the production out there. Generally, in a peaceful war, that was working fine. Now, Ukraine itself is using 150 million artillery shells in a matter of 2-3 mahine. So if you want more drones, you want more missiles, you want more artillery shells, you got to stock up that production. So India is a large base for defense, and this policy of government to focus Atmanirbhar, as they call it, ki domestic focus karo, that's giving a huge fill up. Now India needs ships, it needs tanks, it needs missiles, it needs rifles, it needs so many things in defense. So jo bhi ho economy may grow at 6% or 8%. Orders will keep flowing for this company because no government can ignore the defense. So I think they will do well from here. Some of them had a very good run up. So I'm not saying you buy all of them at this point. You wait or you pick your spots. But I can still find good value in the a stock that you mentioned, Hindustan Aeronautics, which I also own at this time. It's a monopoly business. There's no one else in India who can produce airplanes, helicopters, service them as Hindustan Aeronautics does. And I think COVID के lows इसका भाव 600-700 रुपया था. बिल्कुल. It was that cheap at that time. Company just declared a 20 rupee interim dividend. So why would you not buy? और कहीं वैल्यू दिख रही है सर आपको इस समय इस मार्केट में, PSU या नॉन PSU? There are a lot of, I think, जो हम लोग करते हैं, जो bottom up stock picking करते हैं, even in this lofty level, सेंसेक्स का 60-65 हजार के level पे